Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine and the best of your health and iman. Welcome to the fourth lecture of English grade 5. The name of unit 4 is the flying lady. Dear students, you can see a lady in this picture. Do you know her? Yes, you're right. She is Flight Officer Maryam Mukhtiar. Who is she? Flight Officer Maryam Mukhtiar. So dear students, let's read about the flying lady. Let's read about Maryam Mukhtiar. She was the first female flight officer to attain martyrdom in the line of duty. Let's read about her. Kindly take out your pencils and read with me. It was Monday morning of September 7. Assalamu alaikum. We all greeted our teacher as she walked into the class. Walaikum assalam, she replied. Do you know what special day yesterday was? She asked. It was Defense Day, the whole class replied. Then she showed us a photograph of a lady in a uniform and asked, Do you know who she is? She is Maryam Mukhtiar, replied Umar. Yes, you're right. She is Flying Officer Maryam Mukhtiar, she said. Then she went on to tell us more about her. So students, in the beginning of the chapter, we learned that a teacher walked in the class and all the students greeted her with Assalamu alaikum, and she replied Wa alaikum assalam, and it was September 7. So the day before September 7 comes the Defense Day, that is September 6. So dear students, do you know what Defense Day is or what happened on Defense Day? It falls on the 6th September. And it is to celebrate the spirit that our brave soldiers gave up their lives to defend our country. It was on this day in 1965 that India launched her forces and attacked without a warning on Pakistan and came across the international borders. And our brave forces, our brave Pak army forces replied bravely to them, and we succeeded in the war. So the teacher is asking the class that what day yesterday was, and the whole class replied it was Defense Day. So then she showed a photograph of a lady in uniform, as you can see in this picture. She showed her the photograph that who is this lady. So Umar replied that she is Maryam Mukhtiar, and the teacher said yes, she is Maryam Mukhtiar, and then she went on telling them more about the flying lady. Let's continue our reading. Maryam Mukhtiar was born on May 18, 1992 in Karachi. She was the daughter of Colonel retired Mukhtiar Ahmad Sheikh and Rehana Mukhtiar. She was a good football player and represented Balochistan in the National Football Championship in 2007. Maryam was not an ordinary person. She was a hard-working, fascinating and confident personality. She completed her graduation in engineering. So dear students, we learn about the early life of Maryam Mukhtiar. That was, she born on May 18, 1992 in Karachi, and she was the daughter of Colonel retired Mukhtiar Ahmad Sheikh and Rehana Mukhtiar. We learned that she was a football champion and she represented Balochistan in the National Football Champion in 2007. We also learned that Maryam's personality was not an ordinary personality. She was not an ordinary person. She was a very talented, hardworking and fascinating person, and she completed her graduation in engineering. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि 7 सितंबर को एक टीचर क्लास में आती हैं और बच्चे उनको ग्रीट करते हैं अस्सलाम वालेकुम से, और टीचर उनको रिप्लाई करती है वालेकुम अस्सलाम से. फिर हमने ये पढ़ा कि टीचर ने उनसे पूछा कि स्पेशल डे कौन सा था. आज 7 सितंबर है तो कल 6 सितंबर था. 6 सितंबर को पाकिस्तान में डिफेंस डे मनाया जाता है. डिफेंस डे किस याद में मनाया जाता है? डिफेंस डे इस याद में मनाया जाता है कि 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर शब खून मारा था और हमारी बहादुर फ़ौज ने उसका डट कर मुकाबला किया था और वो जंग जीत गए थे. हमारी मुल्क जंग जीत गई थी और पाकिस्तान जो है वो उनके अटैक से सेफ़ रहा. इसीलिए हम उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी याद में हम डिफेंस डे मनाते हैं. तो डिफेंस डे के बाद टीचर ने क्लास को एक फ़ोटोग्राफ दिखाई जिसमें एक लड़की थी जो यूनिफॉर्म में थी, और टीचर क्लास से पूछती है कि किसकी पिक्चर है, तो उमर उनको बताता है कि ये मरियम मुख्तियार की पिक्चर है. फिर टीचर उनको मरियम मुख्तियार के बारे में बताती है कि मरियम मुख्तियार जो है वो पैदा हुई 18 मई 1992 को. उनके वालिद साहब का नाम कर्नल मुख्तियार अहमद शेख था और उनकी वालदा का नाम रेहाना मुख्तियार था. वो एक अच्छी फ़ुटबॉल चैम्पियन थी और उन्होंने बलूचिस्तान को नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया था 2007 में. फिर उन्होंने ये भी
भी बताया कि मरियम मुख्तियार की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत फैसिनेटिंग थी और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्कर थी वो, और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की वो इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग। Maryam Mukhtar joined Pakistan Air Force PAF in 2011. She went to PAF Academy, Risalpur, with 7 other female Pakistani cadets who graduated as pilot officers. Maryam Mukhtar was posted to PAF Academy, Risalpur on September 24, 2014. On November 24, 2015, flying officer Maryam Mukhtar and her colleague Saqib Abbasi were on their routine training mission in a PAF aircraft. The aircraft developed a serious technical fault during the flight near Miyawali. Both pilots handled the emergency with great courage. They tried their best to save the population on ground and did not leave the craft till the very last minute. Finally, both pilots let themselves out of the aircraft a few seconds before it crashed. Maryam let herself out of the aircraft after Saqib Abbasi, but it was too late for her. She hit the ground, and this caused the shahadat, martyrdom, of Maryam Mukhtar. Maryam became the first ever female pilot of PAF to die in the line of duty. She was buried in the Malir Cantonment Graveyard, Karachi on November 26, 2015. मरियम मुख्तियार ने PAF अकेडमी ज्वाइन की 2011 में, और उनके साथ 7 अदर फीमेल कैडेट्स थी जो कि पायलट ऑफिसर के तौर पे वहाँ से ग्रेजुएट हुई। मरियम मुख्तियार को पोस्टेड किया गया रिसालपुर अकेडमी में 24 सितंबर 2014 को। 24 नवंबर 2015 को मरियम मुख्तियार और साकिब अब्बासी रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे थे जब मियावाली के करीब जो एयरक्राफ्ट है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो उन लोगों ने आबादी को बचाते हुए जहाज़ से उस वक्त तक नहीं निकले जब तक कि उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को सेफ़ जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन जब वो आबादी से दूर चले गए और वहाँ पर उन लोगों ने जहाज़ को लैंड करने की कोशिश की, जहाज़ लैंड ना हुआ बिकॉज़ ऑफ द टेक्निकल फॉल्ट। तो आखिरकार साकिब अब्बासी और मरियम मुख्तियार ने जो है वो पैराशूट के ज़रिए अपने आप को जहाज़ से बाहर निकाल दिया। बट साकिब अब्बासी के बाद जब मरियम मुख्तियार निकली तो मरियम मुख्तियार के लिए बहुत देर हो चुकी थी, वो ज़मीन पर आ गिरी और इसी की वजह से उनकी शहादत वाक़या हुई। और इसी तरह शहीद मरियम मुख्तियार पाकिस्तान की पहली खातून पायलट बन गई जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुई हों। उनको मलीर कैंटोनमेंट कब्रिस्तान में दफन किया गया जो कि कराची में है 26 नवंबर 2015 को। Let's continue our reading. Maryam Mukhtar was indeed a remarkable lady. She sacrificed her life to save the civilian population. She is a role model for all women in our country. Who wants to be the pride of the nation like Maryam? Asked the teacher as she finished her lecture. We all raised our hands. मरियम मुख्तियार वाकई एक बेमिसाल ख़ातून थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की ताकि वो सिविलियन आबादी को बचा सके। वो वाकई एक रोल मॉडल है पाकिस्तान की हर ख़ातून के लिए। तो टीचर ने एंड पे क्लास से पूछा कि कौन मरियम मुख्तियार की तरह कौम का फ़ख्र बनना चाहेगा। तो पूरी क्लास ने हाथ उठाया था क्योंकि सब मरियम मुख्तियार की तरह कौम का फ़ख्र बनना चाहते थे। क्या आप मरियम मुख्तियार की तरह कौम का फ़ख्र बनना चाहते हैं? तो इस यूनिट में हमने मरियम मुख्तियार की बेमिसाल बहादुरी के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सिविलियन आबादी को बचाते हुए जहाज़ को आबादी से दूर एक जगह क्रैश करवाया और ख़ुद भी जो है जाम शहादत नोश किया। तो हमें भी इनकी लाइफ से इंस्पायर होते हुए इसी तरह अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने से दरेग नहीं करना चाहिए। Let's read the vocabulary words of this unit. The first word is fascinating. Fascinating means extremely interesting and attractive. The next word is graduation. Graduation means receiving an academic degree. The next word is courage. Courage means bravery. The next word is let out. Let out, force someone to leave a place. The next word is martyrdom. Martyrdom means death while defending one's religion or country. Was the end of the unit. I hope you get inspiration from the life of Maryam Mukhtiar. Until next time, take care of your families and take care of your health. Allah Hafiz.